अरे यार इसी मतलब ये आदमी ऐसी काम करके चल। Morning to all of you. As we have discussed in previous class about the NAT, so can you tell me what are the different types of NAT configurations? Am I audible? Static Yes, sir. Yes, sir. Okay, so the different types of NAT are like static, dynamic, and NAT pad itself. So let's start with the static NAT. Already I have explained in the previous class. I hope you all have understood about the NAT, static one, dynamic, and NAT and that itself. So if we talk about the static, so it will assign one-to-one mapping with the IP, like each and every private IP should be translated to the public IP. That is the concept of static NAT, one-to-one mapping. So let's move ahead with the our configuration. So connect some routers, switches, and some devices. If you want to connect through the fast Ethernet port, also you can connect because another port is available.
Okay, you can also connect through the fast Ethernet port, but I'll connect through the serial DCPT cable. That will be better. Okay, I need to add the modules then. Okay, guys. So this connection is all about that from the service provider from router one. If you see, let me rename this router. This one is router one. Duplicate device. Okay, connected to router. This one is router three. Two, one. So just look at here. If you see router two, router three, server, and this switch, switch two. Okay. So these are the what configuration you will get it from the service provider. Okay. So this part you don't have to do. I mean, generally people don't do that. So this one is one of the your web server where you'll get the web page access over the net, right? And that will be connected to the switch, and that is another router for the maybe WAN communications or for the uh, that the ISP who will be giving that particular IP to that particular interface of the router. So this part, if you see on the NAT, like router 2, router 3, and all the server configurations, so that will be done by the service provider. So where you'll make changes for this static NAT. So on this router one, okay. So whatever configuration that we will make it, that will be done in the what router one. And this topology, why I have configured, like just understand in the previous class, I have explained you like whenever you are connecting multiple devices and those devices are using their private IP address, right? And when it will goes to this interface, after 0/0, so there till that interface it will be a private, but when it in this side it will in, okay, all the your messages packet will into the interface 0/0, and when it will be out from the serial 0/2/1, so the packet will be out. So from there you should have that one of the what the public IP, so that it will be connected to the internet. So this part is of internet connections, remember this. This router is of internet connection. Can you see my cursor, right? My cursor is visible. Yes, sir. Will you?
Yeah, so router 2 part, you can, if you draw the topology on your notebook, so you can mention it. So router 2 is a part of your internet, okay? And this is all about the wave. If you connect the server PT, server 0, you are saying here, na? So that is your wave server, okay? So there you are, using some of the, like some website you wanted to access. So their public IP will be there, right? Like let it be 200 dot something or 204.10.20.30. So that is the one of the Cisco Corp IP, right? So when you will access from this PC that IP, so if you configure the NAT, you will able to get that web page access. Okay, or also you get the reply from the server. So this part is about, it's a part of internet, and this is your web server part where you will get the packet, the web pages from this side, these locations, and here you will be the client, where you wanted to get an access to your internet or NAT. Okay, so this part will be your private IP because this is your own local network. Okay, when it will goes to here, so there it will be connected to the which IP? That will be a public IP. So there, if you configure NATs, it will map the one-to-one for each and every PC with one public IP, and over the internet, it will get an access that to your web page. So let's start with that. We will configure in the first router. We'll do all the configuration in the first router, but make sure that at least ports should be on, okay, for each and every router. So for understanding, you can make it Excuse on. me, sir. Wait, you can give it. Yeah, tell me. Sir, in the routers, did you change all the routers with WIC 2T? Yes. Sir, you have, sir, I didn't, Allow Mhm. authenticator to autofill. Sorry. like, sir, you have filled all the blocks inside, like all the four blocks that is there. No, not four blocks. Only two block I have filled. If I need more than four serial interface, then I can fill all other blocks. So in each block there are Okay, two sir. serial interface. Just see, in each block there are two serial interface. Serial 0/2/0. Serial 0/2/1. That's the one block. And another block again 0 slash I 3 slash 0, 0 slash 3 slash 1. This is for the another block. Right. So I have added two wide interface card, and in each card we have that two serial interface. But that is not required actually to. If I could have added only one WIC, then also it will work because in each and every WIC 2T there are two serial interface are there. Okay, but I am connecting only one serial interface. So even I'll connect a single the wide interface card, then also it will be okay. So just look at here. Let me go to this router.
So I'm using the network like 10.0.0. Let me mention for our private IP. From this network, I'll assign one IP for the default gateway and rest three IP for the another three IP for the this three PC. And this will be mapped to like this 10 one. Me write it here with the network ID. Okay, I'll mention it somewhere else. Just wait. Otherwise you get confused. Just see what I'll do. Just look at here. The first, let it be suppose we have an IP for the first PC dot 0.0.0.0.2. So 2 will be mapped with let it be 122.1.1.1. Okay. And again, other mapping will be for 10.0.0.0.t, which will be mapped with 122.1.1.2. And the next one 10.0.0.0.4, which will be mapped with 122.1.1.1. Dot one dot, it should be 4. Sorry, 1, 1, 2, and 3. Today with 3. Then, so this is the mapping IP, like from the private to public. 10.0.0.2, that will be mapped to the public IP 122.1.1.1. 10.0.0.3 will be mapped with the 1.2, and this one similarly 1.3. Okay, so what you have to do, first of all, you have to go to the router interface and assign this default gateway IP. So I am on the interface itself, FA0/0, and let it be the IP of 10.0.0.1. And subnet mask is 255.0.0.0. Hit enter. Then another is like go for the another interface. Let it get exited here. SC 0/2/1. INT/SC0/2. Yes. So just before of that, mention INT SC 0/2/1. Enter, and then give the IP. So here, which IP you will assign? Okay. So let it be like one of the ID that you are assigning to this interface. Any IP you can assign. Just at the end you will do the mapping. Okay. So suppose I am assigning that IP like 122.1. IP address. Yes. So without doing exit also, we could have added another interface, right? Yes. So this IP address, and just give one IP. Any one of the IP you can give from this network. That IP doesn't matter. I mean, because this is the IP that at the end we will do NAT on here. So we will map for each and every IP. So just give any IP. 122 dot, let it be 1.1.1.10. And 11 you can use for the other interface. And So why this IP doesn't matter? because see, we will do the mapping for each and every interface. Remember this.
like for each and every PC, not interface, like for each and every PC, because this PC like 10.0.0.2 that will be mapped with this, IP. This one is with another IP, and this interface is what it will be going through that. I mean, whatever IP that whoever will be sending the messages, accordingly it will be mapped. So here it will be keep changing these values. Okay, this one is not a fixed values, because suppose this PC is sending a message. So for this PC, the IP is not what I have mentioned over here. That IP is different, like 122.1.1.1. For this PC one, then another IP will be passed, like 10.122.1.1.2, like that way. Okay, that's why I told you like it doesn't matter because it will keep changing these values. But anyhow, we have to just give one interface IP. So I'm just mentioning it over here. So just tell me the subnet mask of this IP. What should be the subnet mask, guys? C, sir. 255.255.0.0. Which class IP is this? A. So B. B class. How? What Yes, is sir. the A. range of classes? A 191. A, sir. A class. 5.0.0.0.0. Okay, so keep it this value. Now make it no shutdown. You can give the clock rate as well. For the router. So you can assign any other IP, I mean other network IP. So 122 I have used. Let it be 123. So in 0/2/0, why did we do directly no shutdown? Sorry, In the interface 0/2/0, why did we do directly no shutdown? interface 0/2/0. Yeah, no stress. What is issue? We did not assign Currently, any IP. no problem. I will later on you can also assign. Oh, It's not like serial wise like only. It's not a C programming or Java, Python. This is the code like you can. It's not an order. I mean, it's anytime anything you can write. That's not an issue. It will take. So I did no shutdown and IP I have entered. IP I have entered. Okay. So go for the next interface. Make it no SH. So here.
Just assign some other network IP. Let it be 123 dot, right, entered previously 1.1 dot and 1.1.10. Let it be. Okay, and this interface I need clock it. Done. Hit it for other. Is the do write and the command copy running config startup config the function of both are same? Almost the same. That was the copying from the startup to running configuration. And here do write is everything will be saved directly. So I said do write is You write do write, whatever command you have written till that time, everything will be saved. I mean, even you not write do write also, like packet tracer, like this type of features they have enabled nowadays. Like it will be till the time you are not closing it. I mean, entire Windows. So it will be keep as it is. Every command will be there. But if you close the entire thing, then it will be erased. But if you write a do write, so at least like if you close that and again you will open that particular device, so you will get that entire command. Just a minute, guys. Just give me a minute.
So what we were discussing, tell me. Audible? Guys, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, audible. What we were discussing? Someone has asked something, na? Yes, I've understood. Understood. Okay, fine. Let's move ahead with the next one. We have to enter the IP to this interface as well. For hot router. So here you can mention. Let's go to the configuration mode. Serial 0/P/1. And just type it. You must shut down the IP. The IP address. What IP assigned to the other interface? Do you remember? In serial 0/3/0, which IP I have assigned? Anyone tell me? 123.1.1.10? 10 or 1? What I assigned? 10, 10. 10, sir. 10. Okay. Start. Thing is left. Clock is not there. Okay, go to the other interface. This cutter. Anti-cafe 0/0. Make it no such. And you can use any of the IP here. So on this interface, you are using wave server. So wave server will respond according to the that which page you wanted to access with that IP. So it will be varied. So any of the IP you can let it be. I'm just going with the Cisco prop IP. Like there they use can go to. I'm in the interface FA 0/8 where I'm in the serial 0/3/1. Okay. So I need to go to the interface FA 0/0. You are. Yeah, I'm there. We are in that interface. Yeah. I have mentioned here. Okay, fine. So what we'll do, just give any of the IP, like any public IP you can assign. This is not our job. Actually, this is the service provider work. So I can use any of the IP, public IP. I did 404, let it be .10.20.30. A wave server will respond. So I'll just keep it to 1. 204.10.20.1. Now, which class IP is this, guys? What should be the subnet mask? 255.255 C, into sir. Okay. And the IP I have not mentioned, sorry. Here just mention the IP address. Sir, Take, yeah, just tell सर me. सर एक डाउट है मुझे लग रहा है सर राउटर 2 और 3 में वो सीरियल 0/3.0 और सीरियल 0/3.1 में आई थिंक सेम आईपी दे दिए शायद से एक बार चेक कर लीजिए हाँ, सेम Yes, IP. sir. एक मिनट में देख लेता हूँ, जस्ट वेट। पहले इसको खत्म करने दो। IP एड्रेस, okay, okay, fine. This one is correct. Done. Yeah, which one you are asking? In which router?
इस राउटर 2 का सीरियल 0/3/0 का 0/0 का 0/0 तो नहीं है, 0/2/0 है, एक नो 0/3 सर बट 0/3 उसका जो आईपी है अपने 0/3/1 में सेम आईपी डाला है। हाँ सर। एक मिनट एक मिनट 0/serial 0/3/0 में डाला है मैंने 123.1.1.10। यस सर। ठीक है, और तुम लोग बोल रहे हो यहाँ पे 122 डाला है ना नहीं यहाँ नहीं पे नो सर, सर राउटर राउटर 3 थ्री का में, राउटर थ्री का इस। अच्छा राउटर 3 का। ओके, यस सर। 11 डालना चाहिए, क्या डाल दिया? 10 ओहो, डाल दिए सर। 10 डाल दिया, अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं। Let me go to that interface. So I should be in the serial 0/3/1. Okay, INT. Just a minute. Okay, so let's move ahead with the first router. This is the basic part that we have done it already, and it will ping from this PC inside the devices. You get in communications. Let it be this So did you IP. assign the different IP? Sorry, Did you assign the different IP in the where? third router? Yeah, just now I assigned na. So Okay. just at 10 dot. सर आप एक बार फिर से दिखा सकते हैं राउटर 3 का, तो नेटवर्क इशू हो गया था। इसका हैंग हो गया था आपका। हाँ देखो, राउटर 3 का सीरियल इंटरफेस 0/3/1 में मैंने आईपी ये वाला डाल दिया, ये डाल दिया। अब पिछला वाला आईपी को नो आईपी एड्रेस कर दो। रुको रुको, ये में भी ये लिया नहीं होगा शायद, एक मिनट, मैं उसको नो आईपी कर देता हूँ पहले। INT। अपडेट हो जाता है सर। हाँ ऐसे हो जाता है अपडेट, बट कभी कभी राउटर पे डिपेंड करता है कौन सा वर्जन है, वो कभी लेगा नहीं तो फिर इशू होगा। ऐसे जनरली हो जाता है अपडेट। तो अगर तुम, ठीक है रहने देते, बाद में इशू होगा तो देखेंगे, बाद में चेंज करेंगे, अभी रहने दो, क्योंकि फिर दो दो आईपी डाल दिया, फिर दोनों जो है अभी अपडेटेड वाला लेगा तो इसके लिए फिर से मेरे को वही डालना होगा। तो फिलहाल अभी रहने देते हैं। लेट्स सी इफ देयर विल बी इशू देन वी विल चेंज इट लेटर ऑन। Okay, so let's move ahead with that PC.
and I have not configured a DSCP, so I need to assign manually that IP 10.0.0. Let it be 2, and the subnet mask for default text default gateway I have given 10.0.0.1. DNS you can enter, let it be 8.8.8. For the other PC. Again, go to the router 1. Here you can start that NAT transactions. Done. So I already changed the host name. Now I'll move ahead with this. First, just type or to show IP NAT translations. To show IP space it should be NAT translations. Okay. Now what we'll do here, if you that we have not done anything, I mean NAT translations. So we have to first configure it. As it's not coming with any result, I mean simply you can check it through the blue show IP NAT translations. So what I'll do, I'll go to this interface. Like suppose we are on this router 1, and where the packet is coming through the interface FA0/0, that will be the packet will be inside, and it will be outside through the interface SC0/2/1. So that will be the outside, right? So what I'll do, I'll give that particular IP of the PC to that through that interface. So just see what I'll do. Here I can write the command like IP NAT, okay, and just mention that the inside, okay, and give that the source IP, the source. This will be the source IP, and this is the static configuration for the source IP. I mean, we are going through the static one. So static convention, and what is the source IP? So this, suppose this PC is going to send a message, right? So this PC IP is 10.0.0.2. So I have to mention here 10.0.0.2, right? And this one will be mapped with the IP. I am already I have mentioned over here. You can see 122.1.1.1. Let it be. Then IP NAT inside why I mentioned, because this packet is coming from the PC0 to the router 1. So this interface will be the inside one, and the source IP I have to mention
right? And destination will be just like a public IP. This is the NAT translation we are doing it over here, right? So simply I have mentioned that the source and destination in the sense of the public IP. This private is mapped with this public IP. That thing where that concept we are using it over here, right? So it is not for the one PC. I have multiple PC, so I'll do it for the other PC as well. So what I'll make changes here, just change the IP. Like other PC IP is 0.3, 2, 3, and 4, like that way. So this one will become 2. This one done, and similarly do it for the third PC. This one should be 4, and the last one should be 3. Done. Right. Now you can exit from here and you can check it that what is the NAT translation, what I did it till now. So show IP, I'm in the enable mode. I mean, there you don't have to write the do show, so you can simply write the show. If I'll be in the config mode, then I have to write the do show. Okay, the show IP NAT and just give the translations. Just the tab, it will. Yeah, can you see? So when I use the same command earlier, it was not showing anything because I have not configured NAT, right? Now can you see here the inside global or inside local? So inside local is all about your network, like whatever local area network you configure and private IP which you have configured to the each and every desktop or PC. So that IP is coming and comes under inside local. But inside global, if we'll talk about that, so inside global is what, like your PC will be globally, how it will be identified. So it will be identify your PC globally through the public IP address. So that's why you can see inside local is mapped to the inside global with the public IP. You can see here, this is the public IP which just now we have mentioned, right? This is another inside local IP, which is mapped to the inside global IP, and like that way, that has been mapping has been done. Okay, do you understand, everybody? Have you completed till that? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, So sir, what you what will is do next? sir, Yeah, what is outside local? sorry. Sir, what is outside local Outside, when your packet will be sent, that will be the outside. I mean, when it will be sent to the over internet, so there multiple IP will be used na over internet. Like suppose you have sent a message from your PC and which is located in Bhubaneswar, and we have used that local area network and private IP configure in your lab, and when it will be sending over the internet, so it will be going to be MAC because that is the NAT by default it will be configured, right? So it will map with that particular public IP, and when it will be goes to internet, so there again your information will be sent through the another IP. Like your IP will be there. I mean your source will be the same one, but what should be the destination one, and where which server you wanted to access, what or which page you have tried to access. So on that basis, their IP will be accordingly it will be mentioned. So that is the outside local or outside global part. I mean so sir, outside local here basically, with that particular, yeah, tell me. basically it will be used for WAN connection. Sorry, which connection? WAN, Bank. WAN, WAN. WAN. Yeah, you can say that. Yeah, you can say that in that way. So let's move ahead with this. The next one, we have used that another interface, and there we have not mentioned that the particular NAT on that interface FA0/0. So what I'll do, Sir, I'll go to the configuration mode. Yeah, tell me. sir, this, as you said that the packet will go from router 1 to router 2, I understood that. But the thing is, these green dots, they don't have any significance, right? Because from 0/2/0, it is showing backward towards 2/1 in the packet tracer diagram. I didn't get your question. Can you repeat it once again?
Some means that is green arrows, they are showing direction of the packet flow, right? No, that doesn't matter. Just you forget about this arrow in which side it is. It is just like Oh, a symbol. It doesn't matter like if arrow is showing the right to left, so only the packet will be in the from the right to left. It's not like that. It depends. I mean, in which way your communication is going. Like suppose you have sent a message from PC0 to the server. So initially it will be going in which way? Like PC0 to the PC0 to router 1, then it will goes from the router 1 to router 2, then it will go to router 3, then it will go to the reach to the server. And then when the server will reply, the message will come in this way. So the both direction the communication is happening. It's not like one-way communications. बहुत Right? स्लो So चल रहा है, arrow doesn't बहुत matter, स्लो right? एकदम। So arrow is not a the things like where you can say that like one स्क्रीन way only. शेयर ही नहीं हो रहा है, वही बोल रही हूँ मैं, Please स्लो mute it. चल रहा है। Who is that muted? Necessarily they are disturbing नहीं, the लैपटॉप हैंग हो रहा है। Let's see. So I was in the router 1 and let me go ahead with the again configuration mode. Page to get interface FA0/0. Let me check. Okay, yeah. FA0/0. Hit enter and just write IP NAT and mention it here. The packet is coming inside. Okay, so I'm just mentioning inside on that interface. Right, and another serial interface INT SE0/2/1. Okay, here just mention it. The packet is going outside. Okay, so what will mention? IP NAT outside. Then now do one thing. Now we check it so IP NAT translations. Let's see what is coming. So just type to show IP NAT trans. Here actually the tab is not working because generally this command like start with a show. So if you use in the previous mode, the privilege mode, so on there it will work directly. It will press the tab. But I'm in the global configuration mode. So I will enter the do, so that's why it's not taking. So I need to write the complete syntax. I mean word of the translations. Now hit enter. Now see what changes we have got. Any changes? No. So just we have only what we did it. We have mentioned that our interface SE0/2/1 is our outside NAT interface and FA0/0 is the inside NAT interface. Okay. Now what you do is just to go to that PC. Just go to that, reach to the PC and you can yeah, tell me. सर राउटर में कनेक्शन करने के समय फास्ट इंटरनेट पोर्ट पहले से नहीं रहता है ना ऑप्शन में? नहीं, किसी किसी राउटर में रहता है तो तुम डायरेक्ट फास्ट इथरनेट पोर्ट भी ऐड कर सकते हो। इसलिए मैं आज जब कन्फिग्रेशन कर रहा था तो मैंने तुम लोग को बोला भी था कि अगर फास्ट इथरनेट पोर्ट अवेलेबल है तो राउटर टू राउटर तो कर सकते हो कनेक्शन, फास्ट स्ट्रेट थ्रू केबल लगा सकते हो। तो वो अगर अवेलेबल है, नहीं है तो फिर मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा, तुम कर सकते हो। बट जनरली सीरियल इंटरफेस में फास्ट कम्युनिकेशन होता है, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि सीरियल इंटरफेस आप कनेक्ट करो। लेकिन तो अगर वो अवेलेबल है ऐड तो कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं सर? उसका देखना पड़ेगा। इसमें जो फिजिकल जो है ना तुम्हारा ये मॉड्यूल्स, इसमें चेक करना पड़ेगा। एफई जनरली जो होता है ना फास्ट इथरनेट के लिए यूज होता है, तो इसमें मॉड्यूल ऐड करोगे, यहाँ से पावर ऑफ करके ऐड करके चेक कर सकते हो। और दूसरा ये है कि जब तुम केबल कनेक्ट करने जा रहे हो ना, जैसे सपोज मेरे को स्ट्रेट थ्रू केबल कनेक्ट करना है, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये जो मेरा स्ट्रेट थ्रू केबल है
मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे चेक करता हूँ कि स्टेट थ्रू है क्या। तो यहाँ पे जाऊंगा तो मेरा अवेलेबल है, फास्ट इथरनेट पोर्ट है मेरे पास। तो मैं ये पोर्ट यूज कर सकता था यहाँ पे इस राउटर में, क्योंकि सारे राउटर में जितने भी मॉडल्स डिफरेंट वर्जन के जो राउटर होते हैं उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हर में रहेगा फास्ट इथरनेट पोर्ट, एक ही रहता है जनरली। बाय डिफॉल्ट वो लोग एक रखते हैं स्विच को कनेक्ट करने के लिए। बट अगर तुमको ज्यादा चाहिए, मान लो 4-5 तुमको स्विच कनेक्ट करना है, जरूरी नहीं है ना कि एक ही स्विच रहेगा, कभी कभी ऐसे भी सिनेरियो आ सकते हैं कि 4 to 5 switches you have to connect to the router. So in this situation what you'll do? So you have to add the modules. तो मॉड्यूल ऐड करने के लिए तुमको यहाँ पे राउटर में पहले जाना होगा। तो पहले से मैंने बता रखा है तुम लोग को, यहाँ पे जाना, इसको ऑफ कर देना पावर, और देखो एफई वाला में चेक करना, इस पे क्लिक करोगे, ऑलरेडी इस पे मेंशन किया रहता है, यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे लिखा है फास्ट इथरनेट इंटरफेस यहाँ पे दे रहा है ना। इसको ऐड कर सकते हो, एफई को ऐड कर सकते हो या टीएक्स, ये सब ऐड कर सकते हो। तो ऐड करोगे तो तुम्हारा फास्ट इथरनेट पोर्ट इंक्रीज कर जाएगा राउटर में, उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। अंडरस्टूड? यस सर। सर वो जो जीरो लिखा है वो वाला जनरेट शो नहीं करता, उसको कैसे अलाउ कर शो करने क्या? के लिए? कौन सा समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? तो सर वो जो मार्किंग लिखा हुआ ना FA0/4 कौन सा मार्किंग? सारे कनेक्शंस। हाँ हाँ, ये जो लेबल जो दिखा रहे हैं वो बोल रहे हैं? यस 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 सर। हाँ, वो तुम्हारा शो नहीं कर रहा है तुम्हारे पीसी में? नहीं सर। अब तो तुम इसमें जाओ, ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में प्रेफरेंसेस, ऑप्शन में जाना, प्रेफरेंसेस जाके और शो पोर्ट अनेबल का ये वाला अनेबल कर दो, ऑलवेज शो पोर्ट्स लेबल्स इन लॉजिकल वर्कस्पेस, इसको अनेबल कर दो और शो कर देगा। डिवाइस को भी ये सारे अनेबल कर दोगे तो तुम्हारा सब डिवाइस का भी नाम वगैरह सब दिखाएगा। शो डिवाइस मॉडल लेबल्स, शो डिवाइस नेम लेबल्स, ये सब अनेबल कर दो, ये भी कर दो, शो पोर्ट लेबल इन लॉजिकल वर्कस्पेस, ये सब कर सकता है। ये कैसे होगा? जाना है पहले ऑप्शन में, देन प्रेफरेंसेस, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज इट। यस सर, हो गया। तो जैसे कुछ कुछ टेस्ट में ये सब दिया हुआ नहीं रहता है, लाइक इंटरफेस ऐसे हम लोग एनेबल नहीं कर पाते किसी वो लॉक रहता है, तो तब डू शो आईपी इंटरफेस करके ऐसे देख सकते हैं ना? हाँ हाँ, उसमें कर सकते हैं। अच्छा, उसमें देखो तुम लोग का जो टेस्ट हो रहा है ना, आईटीएन टेस्ट जितना भी है, प्रैक्टिकल टेस्ट, उसमें रेस्ट्रिक्टेड है बहुत सारे डिवाइसेस, क्योंकि जो जरूरत का है वही उन लोगों ने एक्सेस दिया है, उसका पासवर्ड वगैरह दिया है, आप उसी में एंटर कर पाओगे, सारे डिवाइस में एंटर नहीं कर पाओगे। जिसका काम नहीं है उसको, जैसे ये देखो नेट का कॉन्फ़िगरेशन देगा तो यहाँ पे तुम लोग को एक्सेस ही नहीं देगा, वो इसको ब्लॉक कर देगा, इसको भी ब्लॉक कर देगा, इसको सब ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है। तुमको बस ये वाला राउटर का एक्सेस मिलेगा, तो यहीं पे नेट कॉन्फ़िगर तुमको करना होगा। तो अगर बाकी डिवाइस में जाके क्लिक करोगे बार बार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लॉक ही दिखाएगा तुम्हारा। तो इसलिए ध्यान से करना है, वहां पे इंस्ट्रक्शन को पढ़ो पहले। इंस्ट्रक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू सम ऑफ द पैकेट ट्रेसर फाइल, where student file, which you can, before giving any practical exam, you can practice it from there. There they have mentioned so many instructions and accordingly they have configured. मैंने क्लासरूम में मैंने डाला है ऑलरेडी पैकेट ट्रेसर स्टूडेंट फाइल, उसमें से लैब 2-4 करो, उसके बाद तुमको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे कैसे करना है। यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट तुम लोग को जो जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर दे रहा हूँ, कन्फिग्रेशन सब बता दिया। लेकिन जब तुम एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे सिनेरियो रह रहा है ना, वहाँ पे तुमको दिया रहेगा कि आपको यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर करना है, यहाँ पे ये आईपी डालना है। तो जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में खुद बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख के तुमको नहीं दिखा रहा हूँ कि हाँ ये इंस्ट्रक्शन है मैं वैसा कर रहा हूँ, राइट? बट देयर आई एम नॉट देयर ना। Here, if I'll give the question, so I will give the instruction. Okay, you have to configure this IP. This router is not been used, and this is for the your server, and where you will get that all the web server web pages access. This one I am telling you right now. But in the question, like nobody is there to speak, right? So on there, the only the information will be mentioned in the text form. So you need to read properly and accordingly perform. Okay. सर That कभी is, कभी जो राउटर का काम आ रहा है वो राउटर लॉक दिखा रहा है, तो वो इनडायरेक्टली कनेक्ट करना पड़ता है फिर या हाँ किसी तो और उसमें क्या डिवाइस? होता है, सुनो सुनो, जो राउटर का काम है, सपोज देखो राउटर 1 का मेरे को काम है, और लेकिन राउटर 1 लॉक है, तो उसको कंसोल पोर्ट से वो कनेक्टेड होगा किसी पीसी के साथ,
वो पीसी को कनेक्ट करो। पीसी को जैसे तुम लोग को स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ाया था कि रियल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि हमारा जो है, अगर देखोगे जैसे सपोज मेरे पास ये एक पीसी है, जस्ट अंडरस्टैंड, ये पीसी हमारा यहाँ पे लगा है और इसको हमने किया है कनेक्ट कंसोल पोर्ट के साथ। जस्ट ये कंसोल केबल यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से तुम कनेक्ट करोगे कंसोल पोर्ट राउटर का, और इस पीसी में जब जाओगे तो RS-232 को कनेक्ट करोगे। ऐसे रहता है। तो ये है रियल एनवायरनमेंट में हमारा। रियल वर्ल्ड में हम लोग ऐसा नहीं करते कि डायरेक्टली राउटर में घुस जाएंगे और उसमें कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। राउटर एक फिजिकल डिवाइस है, सिंपल, वो अपना एक लोकेशन पर पड़ा हुआ है। मुझे अगर राउटर में कोई चेंजेस करना है तो मेरे को इधर लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा राउटर को, या मेरे को कोई डेस्कटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा, या कोई मोबाइल फोन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे वे हैं। तो जनरली हमें पीसी को कनेक्ट करना होता है, या लैपटॉप या जो भी है तुम्हारा वर्क स्टेशन, तो उसको कनेक्ट करना होगा। और हमें चेंज अगर राउटर में करना है तो हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे, इस पीसी के थ्रू चेंज करेंगे, जो कि मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था कि जब तुमको डेस्कटॉप में जाना होगा, फिर टर्मिनल को ऑन करो, फिर ओके करो, और जो कॉन्फ़िगरेशन राउटर में किए हो वो तुम्हारे पीसी में दिखाएगा। देखो जो मैंने किया है अभी तक कॉन्फ़िगरेशन, नेट का किया था, तुम्हारा सीरियल इंटरफेस पे आईपी जो डाला था, आउटसाइड नेट ये सब किया था, ये देखो सारे चीज यहाँ पे शो करने लगे, राइट। तो मेरे को जो चेंजेस करना है मेरे को पीसी के थ्रू करना होगा। राउटर में मैं जितना भी क्लिक करूंगा राउटर तो लॉक दिखाएगा, ऑलवेज विल बी लॉक। तो आई नीड टू चेंज थ्रू द पीसी। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस। सर एक बार वो राउटर 1 का सर वो आईपी नेट ट्रांसलेशन के बाद क्या क्या एक बार दिखा दीजिए सर। Sir, sir, can we connect R1 and R3 directly without any use of intermediate router? R1 and R3 directly? Yes, you Yes. can connect it. So here that is just for the understanding. I have shown like one is for the internet access and all. There is the ISP who will be providing that your internet service. So for that case, I have created this such type of topology. But in your LMS or in your internet, you are getting that only some people you see over the internet, like they are only NAT, they are configuring in single router and PC and this, that much only devices they are connected. They have not used this all part, because actually that is not a job of this. This is all about the service provider, how they'll give the access of the web pages and all. So that's why, just for the understanding, I have connected some routers so that you will understand this. So this part is for the ISP. This part is for your web server, right? So that's why I've connected multiple router and the server and everything. Your job will be done in this single router also. Okay, so let's move ahead with that. You're the first router where we were making changes. Let's go ahead. Okay, I have given that all the IP detail to inside and outside port. So just close this and let's move to the PC. Any one of the PC. Okay, and go to the command prompt. Just ping that the server IP ping 204.10.20.30. So just see, it's showing the destination host unreachable. Okay. Now what you will do? Just mute it, guys. Who is that? See. Okay, so here what I'll do, you can assign this IP. Just see. Here if you're typing like 204.10.20.30, so our destination host is unreachable, and this is the server where you can configure this IP. Here you can mention those IP, but the thing is that we are configuring the NAT, right?
So if you'll give the IP to the server, let it be 204 dot 10 dot 20 dot 30. Okay, and subnet mask is a class C. And what should be the default gateway? Can anyone tell me what I have mentioned? 204 dot 10 dot, which default gateway I have mentioned to that interface guys, pass internet port 20.1. 20.1. Yeah, so 20.1. this port I have mentioned 20 dot. Just mention this. Keep the TNS 8.8.8.8. Done. Just you can close it after this 204 10.20.1 and 30. Done. Now what we'll do, just go to the router. Just see. It's router 1. And here just type so IP NAT translations. Just hit enter. Okay, so we have okay, the same thing, same information we are getting till that time. Okay, let it be. Now what I will do, just go to that PC once again and just type that IP. Just go to the directly browser and just check it. Web browser. Okay, and just browse this IP 204 dot 10 dot 20 dot 30. Hit enter. So HTTP is coming, right? So in HTTP, the port number 80 should show. Just time out. Okay. Okay. Let's go to the IP transfers. Just check the port number is coming or not. So IP translations. IP NAT translations. Just go to other PC. Let me check. Two 204.10 dot. It was the IP of 20.30. Okay, why it is not getting reply? Can anyone tell me what is the reason? One thing we have missed. So routing होना चाहिए ना? Routing configuration protocol we have not cut because they are not directly connected, so they are the neighbors one, and some are indirect connections. So till the time you will not connect that routing, you will not configure the routing protocol in each and every router, you will not have the communications. So that is your job. So this is all about the NAT. Okay, so what you will do, I'll instruct you. You have to configure the routing protocol in this router, and you know that many times I'll taught you already. So again, I'll not going to show this. Okay, so simply what you'll do, once you'll configure the routing protocol in this router, and this router. So how do you verify that your web server is accessing or not, or your NAT is working or not? So you have to go to the PC directly. Either you can check through the command prompt. You can type the IP of your this one, like your server IP. Or another way is that what you can do, you can directly go to the web server, web browser. Okay.
And here on the web browser, the public IP which you have mentioned on your server, right? So that IP you have to type it over here, and you click on go. It will show you some message information right here. So it means that if some message is coming related to Cisco and all, Cisco crop, I think this is the IP of the Cisco crop website. I mean, for the testing purpose they uses. Okay, so there will be some message will come from the Cisco and like this is the web page or welcome to that web server and all like that. Message will come. Okay, so if it is showing this message or it is not showing a request timeout and coming with some message, it means that your server is responding, and now you have successfully configured the NAT, right? Or even you will not check from this, you can check from here also. Like you'll go to the command prompt, you'll type this IP, what I have write it here, the same IP you'll type it, and then you will see that it will be showing that all the pinging of all your entire informations. It will getting a reply from that your server. Okay, so that part you will do it, and I'll post that one of your classwork in your Google Classroom. You have to submit it. All of you need to submit. So do it right now, and I have another class from 9. So I'm just ending the meeting. You have only one class today. Ma'am will सर take next class. Yeah, tell me. सर जैसे स्टैटिक नेट जब हो रहा है तो हर एक प्राइवेट आईपी हर एक यूनिक पब्लिक आईपी से मैप होगा। यस यस। तो बट अपना आईएसपी तो हर एक ही आईपी एड्रेस देता है ना, एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस देगा। हाँ, वो तो इसीलिए तो जब तुम यूज कर रहे हो तो उस समय तो एक ही मिल रहा है ना तुमको। तुम्हारा तो तुम यूज कर रहा है, कोई और पीसी यूज कर रहा है, सबका अलग अलग है अपना। जैसे तुम अब नेट इंटरनेट जब डाटा ऑन करते हो तो तुमको एक पब्लिक आईपी मिलता है, जैसे ही तुम डिस्कनेक्ट हो जाते हो तुम्हारा आईपी चला गया किसी और के पास, वो चला गया। तुम उस समय इंटरनेट पे तुम रिकग्नाइज अभी नहीं हो रहे हो, तो एक टाइम में एक ही आईपी तुमको मिल रहा है एक्चुअली। हाँ, ये तुम बोल सकते हो कि जैसे मल्टीपल आईपी उस नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइस को मल्टीपल आईपी पब्लिक मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं पीसी, तुम बैठे हो पीसी 0 पे, तुम्हारा फ्रेंड बैठा है पीसी 1 पे, तुम्हारा जो है एसोसिएट अनदर जो है पीसी 2 पे बैठा है, तो उस समय जिस समय तुम इंफॉर्मेशन तुम गैदर करना चाह रहे हो इंटरनेट से, तो तुम्हारे लिए एक ही आईपी स्टैटिकली वो जो है पब्लिक आईपी मैपिंग हो रहा है, जो कि तुम्हारे को रिकग्नाइज करेगा ओवर इंटरनेट। बट ये जो बंदा बैठा है यहाँ पे, इसके लिए एक और आईपी है पब्लिक आईपी, वहां से वो उसको आइडेंटिफाई करेगा। तो एक्चुअली ये ओवर इंटरनेट हर यूनिक आईपी हर डिवाइस को एक एक दिया जा रहा है, जो कि आजकल जो है ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है। क्योंकि इसके लिए क्या होगा ना, बहुत ज्यादा मतलब तुम्हारा पैसे का वेस्ट होगा, और दूसरा है कि बहुत ज्यादा पूल ऑफ आईपी, मतलब बहुत सारे आईपी तुमको क्रिएट करना पड़ेगा और वो फिक्स कर देना पड़ेगा कि आपको इस पीसी जब भी जाएगा तो ये मैप इसी आईपी से ही हो रहा है। तो वो आईपी अगर वो यूज नहीं किया तो अननेसरी वो आईपी अभी वेस्ट पड़ा हुआ है, राइट। उसका तो मान लो कि 24/7 तो वो बंदा यूज नहीं करेगा वो आईपी, तो वो तो तुमने ऑलरेडी स्टैटिकली फिक्स कर दिया कि नहीं इस पीसी को मैं यही आईपी आईएसपी दे दिया, कि नहीं मैं इसको ये दे दिया हूँ, एक आईपी इसको दे दिया, इसको एक आईपी। तो जब यूज नहीं कर रहा है तभी भी वो आईपी उसके पास पड़ा हुआ है, तो वो अन्यथा पैसा तुमको चार्ज तो होगा उसका करेगा। तो इसीलिए ये कंसेप्ट जो है पहले बहुत पहले यूज होता था, लेकिन हाँ ये कंसेप्ट है, इसलिए आपको ये जानना है कि स्टैटिक नेट क्या होता है, स्टैटिक जो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एंड देन हम लोग नेट पे जब आएंगे ना, तो वहां पे ये सब चीजें जो है बहुत सारे जो वेस्टेज ऑफ आईपी हो गया या अननेसरी पैसे का जो वेस्टेज हो रहा है बेसिकली, वो सब चीज मिनिमाइज हो जाएगा। वहां पे नेट केवल करोगे तो वो एक पूरे लैंड के लिए एक आईपी देता है, और वहां पे तुम्हारा पोर्ट एड्रेस, जैसे मैंने तुम लोग को पढ़ाया था पिछले क्लास में कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है अगर नेट केवल कॉन्फ़िगर करते हो, नॉट स्टैटिक नॉट डायनेमिक, इधर यू आर गोइंग थ्रू नेट और पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो यूनिकली आइडेंटिफाई तो होगा पीसी, एक सिंगल आईपी से होगा, लेकिन वो सिंगल आईपी से जब स्विच को जाएगा इंफॉर्मेशन, तो वो फिर वो चेकिंग करेगा कि किस पीसी से, प्राइवेट आईपी के किस पीसी से मैसेज आया था थ्रू द पोर्ट नंबर। ओके, और उसके पोर्ट जो नंबर होते हैं, आई मीन हर एक एक पोर्ट का तुमको पता है कि रिप्लाई कहाँ आ रहा है, उस पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस है उसका, उसके थ्रू वो चेक करेगा फिर। क्योंकि वन आईपी से तो सारे लोग तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ओवर इंटरनेट आईएसपी वन आईपी दिया उसको, लेकिन जब वो मैसेज जब चला गया स्विच के पास, तो वहां पे और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे कि हम डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे मैक एड्रेस हो गया, अब मैक एड्रेस उस पोर्ट पे तुम्हारा डिफाइन रहेगा कि हाँ यहाँ से
सोर्स ये था, डेस्टिनेशन ये था, ये पैकेट इसको जाना चाहिए, तो वो उसको उसी बंदे को वो सेंड करेगा, पहले ब्रॉडकास्ट करेगा फिर उसको सेंड कर देगा। तो ये प्रोसेस होता है जो कि वी विल सी इन द नेट। एक्चुअली दिस इज द स्टैटिक वन। स्टैटिक इज वन टू वन मैपिंग, but if you go for the dynamic, there will be a pool of mapping. Then you'll go for the NAT, then single IP will be used for the multiple users, but for the port address translation, accordingly they will be uniquely identify over the internet. That process will be done through the NAT. That we'll see in the coming classes. Okay, so what you have to do, your job is that, guys, everybody needs to configure that routing protocol. Any routing protocol you can use, OSPF, EIGRP, or RIP in each and every router, and just check the connections and check the communication from the server to the PC and whether your pages are accessing or not. And one IP I have given you, I hope you all have used that, 204.10.20.30. Just check it. Okay, so remaining we'll see in the next class, and I'll Sir, post this question in the group, sorry, in the classroom, where you have to submit that. Yeah, tell me. sir, apart from this class, I had a doubt like Python Essential 2 test are not unlocked yet. No, Python Essential, I mean, that is all a self-paced, na? So it will be unlocked by default. No, sir, the second one is not self-paced. That is instruction based. Or Python Essential 2. Yes, sir. Okay. I'll do it by evening. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. सर See you. Yeah. Tell me. सर सीरियल मेरा में शो नहीं कर रहा वो राउटर में क्या 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 नहीं तो शो कर रहा है? सीरियल पोर्ट आपका शो कर रहा है ना 2-3, वो मेरा में बस शो नहीं कर रहा, बाकी सब पोर्ट वो रन वो है। ये कर दो ना, ऑप्शन में जाओ, ऊपर पैकेट ट्रेसर के लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर लिखा है एक ऑप्शन करके, लेफ्ट साइड में टॉप पे, वहाँ ऑप्शन हाँ जाके प्रेफरेंसेस में जाओ, प्रेफरेंसेस में जाके शो पोर्ट को अनेबल कर दो, हो नहीं जाएगा। नहीं 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 सर, कनेक्शन के टाइम पे पूछना। कनेक्शन टाइम में क्या नहीं शो कर रहा है? कनेक्शन के सीरियल। टाइम पे जब सीरियल बीसीई कनेक्ट करते हैं ना, हम्म। हाँ वो समय ऑप्शन जो आता है उसमें ऑक्सिलरी कंसोल फास्ट इथरनेट आता है 2 गो, और इतना ही आता है, सीरियल वाला नहीं आता। आपका में नहीं सीरियल वाला दिखा रहा नहीं, देखो यहाँ पे इसको क्लिक किया, क्या कनेक्शन पे क्लिक किया, है। यस सर। और ये सब नहीं आ रहा है तुम्हारा नहीं सीरियल नहीं से? वो आ रहा है, जब हाँ राउटर टू राउटर कनेक्ट करने का समय जो हाँ, ऑप्शन सीरियल आता है नहीं आ console, रहा। अच्छा, सीरियल ऐड करोगे ना? अरे तो तुम, वही ऐड कैसे करेंगे? हाँ तुम क्लास क्या पहले नहीं आ रहा था क्या? ठीक है, कब का बता चुका हूँ मैं ये सब चीजें। ये देखो, इसको ऑफ करोगे, फिर यहाँ पे इसको देखो, जैसे ही फिजिकल मोड में जाओगे, जैसे जैसे सपोज तुम्हारे राउटर में नहीं आ रहा है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो ये राउटर पर क्लिक करेगा, इसको क्लिक करोगे, फिजिकल कनेक्शन में जाओगे, ये फिजिकल में गए, उसके बाद इसको ऑफ कर देना, ये जो पावर है, पावर ऑफ करके ये WIC जो है ना 2T, ये वाइड इंटरफेस कार्ड होता है, ये सीरियल इंटरफेस ऐड करता है, यहाँ ले जाके सपोज ऐड कर दिए, ऐसे ऐड कर दिया, फिर और भी ऐड करना है तो और भी ऐड कर दो, यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके ड्रैग ड्रॉप करना है बस, फिर इसको ऑन कर देना। इसको ऑन कर दोगे तो ऑटोमेटिक, अब जब कनेक्ट करोगे सीरियल पोर्ट से लाओगे तो शो करने लगेगा ऑटोमेटिक। अंडरस्टूड? यस सर, वो गलत ट्रैक कर दिया था इसीलिए। Okay, so we'll see you guys tomorrow. I'm ending the meeting for all. Next class will be tomorrow, and ma'am will also take your class.